फिर आपको कुछ मिला इंफॉर्मेशन अभी तक? एक इसलिए दिन अभी साल को बाहर भी मिला है, आपको कुछ नहीं मिला है। जी अभी हाँ। तक नहीं दिया। हाँ। यू आर द पीआईओ, Yes. you are the under secretary, Okay. and what do you have to say on this? Actually, 12 2024 में domestic problem due to demise of and other, I couldn't pay attention. तो बाकी वो जो है 23 and 24, 23 4 2024 and 14 5 2024 and 24 9 2024 ये लेटेस्ट रहा and 25 6 24 में हम अटेंड किया। तो आप पॉइंट में तो रिगार्डिंग दिस जो आते हैं तो हम लोग ने इसको सर इंफॉर्मेशन ये करने के लिए हम लोग सप्लाई इंफॉर्मेशन अंदर आके 2025 में ये लेटर हम लोग स्कैनर में कर दिया जी ये कॉपी इधर है जी along with that मैंने लोग जो सबमिट कर सकते हैं वो सब रेडी करके रख देता जी उसके बाद यहाँ में बुक में है जी ऑलरेडी सारी जाएगी लेकिन तो अमेज़न से हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे तो ये सब So you mean to say that you had sent the information to Tanya June yes via DAP, yes via post office yes at his address? yes So he hasn't, I mean, he's saying he hasn't received any information from your side. information not been received from him. Okay. तो तो आपका इसमें क्या कहना है? आपका सामने बोल रहा हम कुछ नहीं मिला इसलिए ऑफिस है। Yes. ऑफिस Can you get and हमने that Yes. So 12th December 2023, the PIO has sent the letter to the film by depositing ₹10 is the fee for the information, and they have sent it through the dark. necessary documents Yes, and the copy, the records of which is attached here. Have sent it on 12/12/2023 itself. इसमें रिसीवर का एक सिग्नेचर है, रिसीवर सिग्नेचर में ये डिलीवरी वाला है, आपने डाक में भेजा है through my delivery system. तो डाक वाले ने उसको पोस्ट ऑफिस से भेजा है ना फिर क्या से भेजा है? कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। RSG Necessary report. email. Has asked the information for only one person, एक आदमी का ना बजाज तो इसमें सर उसमें साफ सेक्शन 8 साफ क्लोज इसका मतलब ये पार्ट्स इस बार
Appointment, regarding appointment, it cannot be exempted from the information, supply of information to client. When you have given the appointment order of Sri Jorsing Moyong, yeah, Bajaj Pool, yes, Bajaj Pool, yes. Next year. So appointment order is here. Joining report also. Joining report is not here. Joining report is not available with you. Joining report basically it would be available with the personal file. Okay. And class 10 certificate under section 8J. Yeah, certificates. So, class 10 certificates, class 12 pass certificates, EPC copies, section 8J. Class 10 certificate is exempted is well considerable. Class 12 certificate exempted is well considerable. But the DPC copies cannot be cannot be taken as exempted because the DPC uh, is done by a group of officers. Yeah, and then it's not a secret. It has to be. It's generally published in the newspapers also. On such and such date there was a DPC and all like that. So it cannot be exempted. But advertisement and printing of the DPC in the daily local newspaper, yes, DPC does not make any advertisement, so it cannot be. They won't have that. This is also correct. Yeah. ST and PRC certificate cannot be exempted. That day also, I have pronounced a judgment in my court that the ST certificate has to be given as it is maintained by a public authority. The certificate itself is given by a public authority, and the records are also maintained by a public authority. So it has to be given. In the case of Ha Tatu, yeah, there was one Mr. Lokam Tasar who had applied for the ST certificate of Ha Tatu. The public information officer was not giving him. So I had pronounced my judgment to be given because it cannot be exempted as it is given by a public authority. And section what you have cited is section 8J also says that I'll read out that very particular section. Section 8J says information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer or the state public information officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, provided that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person. This, some of the PIOs are not seen because there is a full stop here, hyphen. But further, the Act says that provided that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person. But then here it clearly says that the information asked should be in the interest of public. So now we have to see that
furnishing of the ST-PRC certificate of Vijay pool is in public interest or not. On that day, in the newspaper also now, it's very viral. There is a committee who are asking for what is the name of the committee? ST committee or offspring committee, something like that. So it is in the public domain now. So the public is interested, Arunachal public is interested to know the ST certificates, the authenticity of the ST of some of the members, even top bureaucrats also, top public leaders also. So in the present context, I think you have to furnish the certificate, ST and PRC certificate. Okay. But the class 12, 10, and the BE certificate, this won't be, this will remain exempted in this instant case. But had the appellant been someone who is in competition to this pool, or someone who had sat in an examination with this Mr. Pool, I would have allowed the disclosure of the certificates. But as he is not an interest party to the veracity and authenticity of the certificates by virtue of which Mr. Pool had got that appointment order, I cannot order it to be given to the uh, appellant before me. But the ST and then PRC certificate be given to him, record it, and the rest of the informations which can be given are already furnished, are already ready with the PIO, who also has sent a letter to the appellant on 12 December 2023 itself to deposit an amount of rupees 10 as the fees for the information, to which the appellant states that he is not aware of this whatsoever, as the PIO has turned up for the hearing after many instances of hearing dates fixed and absent in the preceding hearings. The letter from the PIO is handed over to the appellant by the commission in the open court, to which, so we can give this copy to him now, to which the appellant has received. Regarding the information stored by the appellant in his Form A, the detail, the detail of information sought in serial number 2, serial number 2 is stated by the PIO that it is not available in your office, and so it is not provided here along with the other information. And regarding the information sought under serial number 3 and 4,
N6 will not be given as serial number 4 information stored under serial number 4 and 5. Serial number 4, 3 and 4, 3 and 4 are exempted under Section 8, Clause J of the HIF 2005. Information for in serial number 6 is not will not be given to the appellant because the office of the PIO does not advertise the sitting of DPC in local newspaper. And information sought under serial number 8 and 9 also are exempted under Section 8, Clause J of RTI Act 2005 and hence will not be made available to the appellant. And regarding section information sought under serial number 10 of the application of the appellant, the Commission orders the PIO to give the information as sought within a short period of time in the interest of justice. So अब सुन लिया ना का आपको एसटी सर्टिफिकेट मिलेगा अभी इसमें जो नहीं गया ना एसटी सर्टिफिकेट नहीं है इसमें पीआईओ देगा और पीआरसी देगा और बाकी तो जो आप सीरियल नंबर 6 में मांगा है ऐसा वो लोग डीपीसी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है लोकल न्यूज़पेपर में वो तो जब नहीं करता है तो आपको नहीं मिलेगा कहाँ से देगा वो लोग हाँ हाँ वो यहाँ में लिखा हुआ है इन राइटिंग वो लोग दिया है डीपीसी डज नॉट मेक एडवर्टाइजमेंट ऐसे लिखा हुआ है आपको दिया हुआ है हाँ और जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी वो लोग नॉट अवेलेबल लिखा है बिकॉज वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का डिवीजन में ही होगा तो यहाँ वो नहीं करेगा तो आप इसको रिसीव कर लीजिएगा देख लीजिए और ऑन और बिफोर नेक्स्ट डेट कब है फिक्स नेक्स्ट डेट 21 जनवरी सुबह ना शाम next on or before the next date you give the ST and PRC certificate to the appellant on or before 21st January 2025 because the next date of hearing is fixed on the same date 1:30 p.m. So 21st January का पहले आप सुनिए इधर में आप जाके एक बार मिलिए सर से या तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर तो दीजिए सर को अभी और या तो आपका कोई एड्रेस जहाँ पे वो लोग भेज सकेगा ना तो जो इंफॉर्मेशन हमने आज ऑर्डर किया है आपको देने के लिए शायद 2 है और देना है तो उसको आपको देगा ऑन और बिफोर 21st जनवरी 2025 और 21st जनवरी 2025 का पहले अगर आप वो दोनों इंफॉर्मेशन को पीआईओ से मिलता है काइंडली लेट अस नो हम लोग को बता दीजिएगा
कि आपने वो इंफॉर्मेशन मिला है करके, सो दैट 21 जनवरी को इवन आप दोनों नहीं आने से भी विल डिस्पोज ऑफ द केस अननेसेसरीली। सर भी यहाँ आएगा। 3 और 4 को उसका क्या करें? वो सर्टिफिकेट्स का उसको हम नहीं देगा बोला ना, प्रोनाउंस केस। नहीं, सर ये जो है आप अगर उसका साथ में कोई एग्जाम बैठ के, आप ए या जेई का एग्जाम में बैठ के इस आदमी के साथ में आप भी एक उस समय का कैंडिडेट होता तो हम आपको देता। तो ये इवन मार्कशीट भी सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, आपका ही सिर्फ मार्कशीट सीबीएसई को देने के लिए, लेकिन आप किसी और का मार्कशीट नहीं मांग सकते। लेकिन वो फिर जज के ऊपर है। हम आज ऑर्डर करना था आपको देने के लिए, अगर आप उनका साथ में ये एग्जाम, जिस एग्जाम में बैठ के ये जो आदमी आज कोई ए है जेई जो भी है, लेकिन आप तो ऐसे उसके साथ एग्जाम में तो नहीं बैठा है, तो आपका लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता है to see that he is authentically capable or authentically he has got his post जॉब वट एवर भी। लेकिन आपको जो जो अभी हम एसटी भी नहीं देना था, लेकिन अभी जो एसटी इतना सारा ऑल अरुणाचल में कोई हल्ला हो रहा है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक आई हैव ऑर्डर आपका आज का केस में भी और हाथ हथु का केस में पहले तो एक दो केसेस आया है, हम लोग एसटी को भी नहीं दिया है, बिकॉज इट कम्स अंडर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो सर ये जो ना हम लोग जो मान रहे हैं, जैसे कि ऑफिस में जो वो लोग सबमिट किए हैं जी और मेरा इस सब में वो पब्लिक डोमेन में आ हाँ, रहा पब्लिक है। डोमेन में आएगा। और हम एक्स्ट्रा उसका बायोडाटा या कुछ पर्सनल एफर्ट मांगने से वो अलग है। जी 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 और इसलिए उसका बोला बोला सही है, साथ में हम लोग एग्जाम देता है जी तो जी वो भी सही है। और हम लोग पहले से भी हम लोग मान के आए, जोरा का भी हम मांगा था, जी पीआरसी क्वालिफिकेशन पूरा होगा, मिल गया उसका ना, जी उसका पूरा मिल गया। और एसटी और भी इम्पोर्टेंट अभी पूरा टेक चल जी रहा वही वही है हाँ हाँ हाँ, पीआरसी में। इसके लिए हम दे रहे हैं। कि पता ही नहीं चल रहा है लोकल है ना, नॉन एग्जैक्टली लेवल पता ही नहीं चल रहा है ना। क्वालिफिकेशन का सर और एक तो है, कुछ भी डॉक्यूमेंट मेरा पास बहुत है। जी जैसे कि आपको देखा था, आप करना जो है, अरे इससे क्या होता है, जी उसमें भी फेक चल जी बराबर ऑप्शन बाहर में उधर तक स्टूडेंट में आप लोग उधर तक आरटीए मारने से फेक निकल जाता जी। है। वो चीजें क्यों, लेकिन तो हम लोग क्या जरूरत है, हम लोग ये सब देखने के लिए ना। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना पड़ेगा हाँ, एक नंबर। पब्लिक इंटरेस्ट। अभी तो पब्लिक इंटरेस्ट उसका क्लास 10 12 सर्टिफिकेट, ये पुल का क्लास 10 12 सर्टिफिकेट मिलना, आपको देना कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो। और वो अगर ऐसा कोई इश्यू बहुत बड़ा पब्लिक में निकल जाता है तो the court has to see the interest of the public also, but hearing in this particular appeal, in your appeal, ये मिस्टर पुल का क्लास 10 12 सर्टिफिकेट आपको देना कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, बट अभी पब्लिक इंटरेस्ट क्या है अरुणाचल में, एसटी सर्टिफिकेट पीआरसी ये सब जोर शोर से चल रहा है, तो वी ऑल्सो हैव टू सी टू इट दैट पब्लिक इंटरेस्ट में इसलिए आपको दिया गया। सर ये भी, जैसे कि ये भी पब्लिक इंटरेस्ट है। ये जो उन लोग जो कुछ हम लेबर उन लोग का पकड़ता है तो हम मीडिया में नहीं आ वो जाएगा। आपका अलग, वो हाँ, आपका आप उसको दूसरा फोरम में हाँ, आप दूसरा तरीका से भी, हम्म, क्योंकि when you have something which you want to prove alter bias to someone, तो आपके लिए ये कोड नहीं है। तो अगर आप किसी और दूसरा फोरम में, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो है अरुणाचल, जो पहले एसआईसी था, अभी वो एसीबी नाम दिया है शायद, एंटी करप्शन ब्यूरो, पहले जिसको हम लोग एसआईसी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग सेल या विजिलेंस होता था, तो उसमें आप जा सकता है। जैसे करप्शन स्पेशल करप्शन कोर्ट है, देयर आर अदर कोर्ट्स वेयर इन यू कैन गो, एंड उसमें क्या होगा कि कोर्ट ऑर्डर करेगा टू वेरीफाई दिस सर्टिफिकेट। तो आप ऑलरेडी आपके पास में है, इट सीम्स वो आप बोल रहे कोई ऑफिसर आपके पास में ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स है जो विश्वास करने लायक नहीं है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो उसको दूसरा आपका फोरम से दो जाने के लिए। वो इसमें सर तो नहीं, लेकिन नहीं देगा अभी, अभी से में उसका निकाल दे डिस्ट्रिक्ट है ये हो सकता है। लेकिन 10 12 का तो नहीं देगा, आपका 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 पर्सनल इंटरेस्ट हम देख रहे हैं अभी ना। ये पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। नहीं नहीं उसका हमको कुछ I am the दिखाई judge here ना। According to me, I don't see any public interest in asking the class 10 and 12 certificates of Mr. नहीं Pool. नहीं, ये जो
शायद 10वीं पास नहीं भी हुआ हाँ हो, ऐसा भी हुआ हो, इसलिए उसका भी निकला आई जाता ऑल्सो था। नो दैट, हाँ, इसलिए बोल रहे हैं ना, अगर आपने हुआ उसके पास साथ हुआ है तो में, देखिए। जी अगर आपने उसके साथ में कोई एग्जाम में भेजता तो हम आज प्रोनाउंस कर देना था, इसलिए देना है तो वो। कहते थे, और तो ये लोग तो पहले जमाना हम कहा हम लोग का सामने एग्जाम ये तो जो हम लोग भी आर्थिक गाइडलाइन हिसाब से हम लोग भी राइट बनते हैं ना, जी जी किसी का भी हम पर्सनल तो नहीं मांग सकता जी है, जी जो जी ऑफिस में जो सबमिट किया उसको सिर्फ जी जी। सबमिट नहीं किया नहीं तो ऑफिस में सबमिट सबमिट, नहीं किया बोलकर लिख दीजिए था, वो नहीं भी हो नहीं जाएगा। नहीं, ऑफिस में सबमिट किया बोल के वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा वो भी नहीं है। हम लोग को देखना पड़ेगा आरटीआई का मेन चीज क्या है। हम लोग भी सब पीआईओ भी नहीं समझता है। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग दिस लॉ इज दैट whatsoever documents or informations in the public office are for the public interest, उसको देना चाहिए एक्चुअली। गौर से अगर कोई इंटरप्रिटेशन का साथ में आर्ग्यू करेगा तो इसलिए जो जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में देखा है हम आपका अपील में, हमने उसको आपको देने के लिए ऑर्डर किया है। दोस्त whatsoever information I have seen that it doesn't come in the interest of the public, हम इसमें मत दो बोला 10, 12 और बी था। उसको अब दूसरा कोई ये कोई दूसरा सोर्सेस से भी हम तो कलेक्ट कर सकता है, इफ यू नो हिज कॉलेज एंड ऑल। दूसरा तो सर जी रास्ता जी भी है, क्या में सिर्फ आपका आरटीआई कमिश्नर कोर्ट से निकाल सकते हैं, जी और जी दूसरा भी तो रास्ता है। नहीं और रास्ता यही है, हाई कोर्ट या सीजीएम कोर्ट जी उधर में जाने से तो हाँ मिलता है, उधर में मिलता है। हाँ और उन लोग का जितना महीना में पेमेंट मिल रहा है वो भी पूरा मिल जी जाता है, क्या मिल जाएगा बोला। बिकॉज वो लोग तो वो लोग कोई केस अगर आपने दिया है तो कोर्ट का काम है कि देना ही है। लेकिन हम लोग का उतना बड़ा वो लोग का जैसे वो लोग का इनहेरेंट पावर्स भी है वो सब कोर्ट्स में ना। हम लोग का कोई अपना इनहेरेंट पावर्स नहीं। हम लोग का है कि इस छोटा सा एक्ट के अंदर में कितना है हम लोग का 19 सेक्शन सी है 20 सेक्शन सी है, उसका अंदर ही हम लोग का सीमित है। तो उस अंदर में आई हैव टू सी if the information source is really in the public interest or no. And if I find that it is in the public interest, I'll order it to be given to you. इसलिए एक दो केसेस भी हम जैसे जीएसटी का भी एक दो का हम पहले कमिश्नर्स लोग नहीं दिया, इसकी भी पहले कमिश्नर्स लोग मना किया है। हम एक दिया दो, दिया दिया हाँ था। एक दो लोग हम तो दिया है अभी का समय देख के। तो 21 जनवरी तक आप इंफॉर्मेशन को इनसे पीआईओ से कलेक्ट करके हम लोग को बता दीजिएगा मिला नहीं मिला। उसका सर निकल रिस्ट्रिक्ट है ये दोनों का ना। नहीं वो तो नहीं देगी। ये हम लोग पीआईओ का पास नहीं है तो अलग है, हम लोग का पास है, नहीं वो लोग का पास तो होगा ही, इसलिए लेकिन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं देगा। ये तीन बाकी को तो देगा, बाकी जो नहीं दिया वो देगा। एसटी एंड पीआरसी को आपको मिलेगा। सर इतना साल से हम लोग मार रहे हैं ये डॉक्यूमेंट पूरा दे रहा था, लेकिन अभी किसे अब बोला आपको तो समझ नहीं ना नहीं आ रहा है। पहले से तो मिल रहा है ये डॉक्यूमेंट। जी जी और इसलिए हम लोग सिर्फ वही देखना चाहते था कि ये आदमी क्वालिफाई ही ना। एग्जाम्पल सर हम भी अभी टेक बना के हम अभी कहीं ऑफिसर बन जाएगा और हम लोग कौन पीछे करे पकड़ नहीं सकेगा। आपको उस लास्ट हर कमीशन में लास्ट सुनता आपको उस आदमी को पकड़ सकेगा जो जो आदमी लोग उस समय आपका साथ एग्जाम दिया था वो लोग पकड़ सकेंगे। सर ये लोग का समय में एग्जाम भी नहीं नहीं व्हाट एवर भी वो था। लोग का कोई अभी जैसे कि अभी नहीं, डीपीसी में हुआ ना। अभी डीपीसी, डीपीसी है, हाँ पहले डीपीसी नहीं था जहाँ तक अपॉइंटमेंट हुआ था जी सर। जी जी फिर उसका साथ कौन साथ में एग्जाम देने वाला नहीं था, जी। ऐसे अभी बहुत मिल गया था अभी जैसे कि डीपीसी में उसका सीनियरिटी को किसी और का सीनियरिटी को उन्होंने पहले आ गया ये मिस्टर पुल में तो वो आदमी ने जाके उसका चैलेंज कर सकता है। ऐसा वाला चैलेंज किया वाला एक दो केसेस है जो इवन नौकरी से भी आउट हो गया यही लेवल तक का। ऐसा तो आप 21 जनवरी 1:30 PM को हम लोग को बता दीजिए। बिफोर दैट इफ यू गेट द इंफॉर्मेशन डू लेट अस नो, यू डोंट हैव टू कम। आपको इधर आने का भी नहीं है, विल डिस्पोज ऑफ दिस जो जो आज ऑर्डर किया है। तो यस या यू हम कोई नहीं है सर। क्या नो प्रॉब्लम, नंबर पे दी नो प्रॉब्लम। हाँ 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 Mr. PIO, we won't be issuing you any formal notice for the next date of hearing as you have been told.
हम लोग कोई आपको अलग से कागज नहीं देगा। होगा अभी 21 जनवरी आप सुन लिया तो वी वोंट सेंड एनी नोटिस। ये देगा। जी जी जी। इसका नंबर ले लीजिएगा। एम डोंडुक टोंकर एंड खंडू टोंगडॉक एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी दिरांग। नहीं है क्या? ऑनलाइन है पीडब्ल्यूडी दिरांग। पेम डोंडुक टोंकर एंड खंडू टोंकर। नहीं आया। एब्सेंट। और सब ऑनलाइन है। यस हाँ ओके। हाँ both the PIO both the appellant and PIO present online. Yes. So, Pem Dondu. Yes, Pem Dondu. Can you hear me? हाँ, Dondu, can you hear me? Dondu सुन पा रहा है ना? अच्छा, उस दिन से अभी तक आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया पीआईओ ने? एक एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया? Yes, PIO, yeah. Yes, you are audible. So what do you have? What do you? Yes, yes. What do you have to say? The appellants are saying that you haven't given them any information so far. Okay. Yes, yes. Carry on. So, Mr. PIO, you are saying that the informations already have been sent to the appellants through post office. Okay, through post. Okay. The second, you're also saying that you have ready another set of informations, but the appellants haven't come to you to take the information. So don't do. जी जी। So don't do आप थोड़ा सुनिएगा। आप थोड़ा सुनिएगा। ये पीआईओ एक आपका आपका सामने में ओपन कोर्ट में ये बोल रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन आपने जो मांगा था उनको पोस्ट से भेजा है। एक एक नंबर। और वो एक पीआईओ एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्वेंट है। उन्होंने ओपन कोर्ट में ये बोल रहे तो सही होता हो उनका कहना। एक नंबर।
और दूसरा नंबर ये है कि उन्होंने एक और दूसरा नया सेट आपके लिए इंफॉर्मेशन रेडी करके रखा है, आपने उनके पास नहीं आया बोल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि आपको ऐसा इंफॉर्मेशन रेडी है करके आज तक कोई इंफॉर्मेशन उस पीआईओ से नहीं मिला, बोल आप बोल रहे हैं ना। तो इसमें पीआईओ सर, आप अभी ये लोग को मालूम हुआ कि इंफॉर्मेशन आपने एक पहले भेजा, दूसरा आपने एक सेट और रेडी करके रखा है, तो आज जब दोनों आमने सामने है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम ऑर्डरिंग द appellants to go to the office of the PIO and collect the informations. दोनों लोग सुन रहे हैं ना? आप जी, आप पीआईओ के ऑफिस से जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर दीजिएगा, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद अच्छा से पढ़िए। अगर आपका इंफॉर्मेशन फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन पीआईओ ने दिया है, तो नेक्स्ट ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में आप हमें बता दीजिए कि आपको इंफॉर्मेशन फुल्ली मिला है कि नहीं। तो फुल्ली मिला है तो हम लोग केस को डिस्पोज कर देंगे, fully नहीं मिला है तो हम लोग will ask the PIO as to why he hasn't provided you the full information. So, so then Mr. PIO, we won't send you any other notice. Don't look, we won't send you any other notice regarding the next date of hearing. We'll fix the next date of hearing on 21st January 2025, 1:30 p.m. दंडुक सुन रहा है ना? तो आप उससे पहले, हाँ, उससे पहले आप पीआईओ ऑफिस में जाके आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए। So, Mr. PIO, they will come to your office to collect the informations, and if you provide them the information, if the appellants, after going through the informations, if they find out that the informations that they have sought for are not completely provided by you, they will let us know. Let me know on the next date of hearing. And the next date of hearing is, I repeat, on 21st January 2025, 1:30 p.m. Okay, fine. Yeah. And the next is Dawa Tenjing and Executive Engineer PWD Dirang. Say the same PIO. Dawa Tenjing. Yes. Yes. Okay. तो तेंजिंग तो ये पीआईओ बोल रहा है अभी का जो पहले दोंदुक का केस का बराबर ही ये बता रहे पीआईओ ने, बोल रहे कि सारा इंफॉर्मेशन रेडी है, आप जाके उनको कलेक्ट कर लीजिए। Herein, Mr. PIO, you have to take note that when you have compiled or readied the information, you have a duty to intimate to the appellants by written form stating that the informations are ready and to collect it from your office, which is really in the safe side of your office always. But without any letter, the appellants also will not know that their information is sought are ready with you or no. उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट टाइम से। appellants को एक चिट्ठी भेज दीजिएगा आपका ऑफिस से कि इंफॉर्मेशन रेडी है, कलेक्ट कीजिएगा बोल के। सो तेंजिन, द ऑर्डर विल गो द सेम लाइक दोंदुक का केस में हम लोग 21 जनवरी तक को आपसे फिर सुनेंगे आपको इंफॉर्मेशन फुल्ली मिला कि नहीं मिला। जी जी
नहीं, इसलिए नहीं, तेंजिंग तेंजिंग इसलिए तो आप लोग सबको फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगा, अभी फ्री से इंफॉर्मेशन को मिलेगा। आपको पेमेंट करने का नहीं है, लेकिन पीआईओ को मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपका केस में नहीं, हर एक केस में जब भी इंफॉर्मेशन रेडी होता है तो एपिलेंट को एक लेटर भेजना है अपना ऑफिस से, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द पीआईओ टू द एपिलेंट, स्टेटिंग दैट इंफॉर्मेशन आर रेडी। अगर कोई फीस देना हो तो भी क्लियरली स्टेटिंग इन दैट वेरी लेटर कि दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ फीस रिक्वायर्ड, ऐसा लिख के एपेलेंट को भेज देना है। एंड देन विदाउट द रिकॉर्ड्स की आपने भेजा है तो वी कैन ऑल्सो टेक इट एज एन एविडेंस दैट द इंफॉर्मेशन आर रेडी करके पीआईओ ने एपेलेंट को बताया करके हम लोग भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। बट वट एवर बी द इंफॉर्मेशन आर रेडी एज पर द स्टेटमेंट्स ऑफ द पीआईओ, आपने जाके 21 जनवरी 2025 का पहले पीआईओ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग को उस दिन को बता दीजिएगा। ओके फाइन। तो the it, the same parties to the same different cases. इसमें भी the same PIO and Mr. Dondup the same appellant is again. तो इसमें PIO सर इसमें क्या कहना है आपको? The case is 141, epic number 141। ओके ओके। नहीं, इसमें आपका और है क्या? पीडब्ल्यूडी का और है तो ये आई ही है 142, इसको पहले देख लेता है, 142 को देख लेता है पहले, एपिक 142। जी, इसमें दौरजी, श्री दौरजी एंड देन द सेम पीडब्ल्यूडी डीराम। इसमें दौरजी आपका क्या कहना है? 21, इसको भी 21 जनवरी को ही फिक्स करेगा। दौरजी आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देख लीजिएगा, इफ वट एवर यू हैव अप्लाइड they have been given to you completely or no. Let us know on 21st January 2025, 1:30 p.m. Okay, there was this one. Okay, 145 also the same. Yes, 142, 143. 143 is also the same PIO, 143. Epic 143. Dawa, uh, Dawa, Dawa, दावा का कहाँ पे है? दावा कहाँ है? मिस्टर दावा, वो वो लोग चला गया क्या? वीडियो ऑफ कर दिया इन लोग। तो पीआईओ सर इसमें भी आपका वही है, सब इंफॉर्मेशन रेडी है। तो जी 145 भी ना, जी 143 भी है आपका, 145 भी है। जी तो चला गया, ऑनलाइन नहीं है अभी। हाँ, थोड़ा पूछो तो कॉल करके। 143 भी है।
यस हेलो। तो आपका आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ओके, अभी 143 और 145 में भी द सेम ऑर्डर विल गो। पीआईओ सर बोल रहा है ये दोनों केसेस में भी जो एपिक 143 एंड एपिक 145 में, जिसमें श्री सोनम ग्यात्सो 145 में एपिलेंट है और 143 में दावा दावा एपिलेंट है। तो आप लोग सबका इंफॉर्मेशन पीआईओ के पास में है बोलता है। आप लोग एक बार जाके पीआईओ से इंफॉर्मेशन को ले लीजिएगा। लेने के बाद हमको 21 जनवरी 2025 1:30 पीएम को बता दीजिएगा। आप लोग सब केसेस में द सेम ऑर्डर विल गो। ओके मिस्टर पीआईओ आप वो लोग को दे दीजिएगा। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज 21 जनवरी 2025 1:30 p.m. ओके जनाब। यस पीएचडी का है आपके पास में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी दिरांग डिवीजन। ऑनलाइन है क्या? ओके सो दोनों इसमें आपका क्या कहना है? ओके तो उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो द पीआईओ पीएचडी दिरांग, आप सुन पा रहे हैं? ये जो ऑनलाइन में हिमांशु ये पीआईओ। ओके आप सुन पा रहे हैं? दिरांग दिरांग जी। वो म्यूट करके रखा होगा नहीं। ना पीआईओ आप वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी दिरांग यू कैन स्विच ऑफ द वीडियो। आपका केसेस हो गया है। आपका केसेस हो गया है। जी 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 सर बोलिए। आ, उस, उसमें आप एक उसमें उसमें आप एक लेटर एप्लीकेंट को ये लिखिएगा कि आपका जितना इंफॉर्मेशन मांगा है बहुत लंबा है। नया 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 एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं हम। तो मेरा पास ऑफिस स्टाफ भी कम है और आपका इंफॉर्मेशन बहुत लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा है। हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लगेगा और पब्लिक सर्विस में थोड़ा हंकर होगा करके आप उसको थोड़ा कम कॉन्साइज फॉर्म में कॉन्साइज वे में आप फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए बोल के विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आप उनको रिप्लाई कर दीजिए। और सेक्शन आपको देखना है सेक्शन 6 सेक्शन 7.9 ये सब को थोड़ा गौर से देख के यू राइट योर लेटर टू द एप्लीकेंट साइटिंग ऑल दी सेक्शंस। आप लोग भी थोड़ा पढ़ना है एक्ट को बिकॉज इट द होल एक्ट एक्चुअली सर्कल्स अराउंड ए पीआईओ ओनली। तो आपको इस आर एक्ट से वाकिफ होना है। हर एक द एवरी वर्ड दैट इज एवरी लाइन दैट इज रिटन हियर the wisest of interpretations also needed from the PIO side। इसलिए आप थोड़ा उस
समय विद इन द टाइम आप रिप्लाई कीजिएगा एप्लीकेंट को कि our staffs are short, the information you have asked is too voluminous and spanning to many long years, which will hamper the public services of this public office. So in the interest of public, we request you to resubmit a fresh application specifying the particular of information required by you within for certain schemes that is easy for us to provide to you and that won't be hampering the public services of this office. ऐसा करके सुंदर से इन प्रिसाइज लिख के वापस आप एप्लीकेंट को देने से they cannot complain कि the information was not given to them. These are the things, wise things that we have to think about and we have to apply using our judicial mind also at times. जी जी ध्यान रखना. Okay, now I'm coming to the next case. Yes, yes. PIO, PHE. Yes, can you hear me? PHE Diram, can you hear me? Okay, ये एपिलेंट का कहना है कि एपिलेंट इज मिस्टर पेम डोंडू और खंडू तोंकर दोनों का कहना है कि आपसे जो इंफॉर्मेशन मांगा है अभी तक आपने नहीं दिया है. जी जी. सो मिस्टर पियायो, पियायो आपका ये कहना है कि जो दो इंफॉर्मेशन अभी तक एपिलेंट को नहीं दिया वो आपके पास में रेडी है. ओके, तो वो हार्ड कॉपी को दोनों आप जाके पियायो को ऑफिस से ले लीजिएगा. जी वो भी है ना. अभी तो सिर्फ आपको दो इंफॉर्मेशन देना है. नहीं, एक यूसी है और एक एनओसी है. ओके ओके, तो अभी वो हाँ 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 हाँ. तो अभी यूसी को आप टोटली जितना यूसी है उसको दे दीजिएगा. वो लेन का एनओसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस किया था. हम लोग यहाँ पे एनओसी को डिटेल में डिस्कस किया था. जो आपके पास ये आपका पास में नहीं है एनओसी तो आपको सिर्फ रीजंस लिख के उसको देने के लिए बोला था कि you don't have the copy of NOC with you and generally the government doesn't implement schemes in that way. कुछ भी whatever be your reply में आपके पास जो नहीं है वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है करके उसका रीजंस को आपको लिख के देने के लिए बोला था. आई एम नॉट सेइंग कि आप एनओसी कॉपी को उनको दीजिएगा. आई एम सेइंग कि आपके पास एनओसी नहीं है, आप लोग एनओसी यूज नहीं करता है ऐसा केसेस में पानी का ये सब में. तो आपके पास नहीं है तो नहीं है करके उनको अच्छा से लिख के सील एंड साइन करके दे दीजिएगा. वो बोला था. हाँ वही बोला था. जी. आप वो अभी आप वो एनओसी नहीं है करके द रीजंस फॉर व्हाई देयर इज नो एनओसी इन
your office for this particular scheme, as well as the UC आप दे दीजिएगा on or before 21st January 2025 1:30 p.m. So दोनों आप जाके कलेक्ट कर लीजिएगा। जी जी बोलिए। यस। जी। यस। जी। जी। जी वो भी है फिर 6 महीना तो हो गया है। 6 महीना हो गया है। हाँ हाँ। हम्म। इसलिए हम लास्ट टाइम आपको उस compassionately I had asked you, suggested you to come online, नहीं तो आप बीराम से हमेशा इधर आते रहेगा, and then PIO doesn't reach, तो आपका एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा करके I had suggested you to come online, तो आज you are online, that's good. तो इसलिए let us see, इसमें अगर वो नहीं देता है तो we have 2-3 options to जी। यस यस यस। जी जी। हाँ नहीं हाँ नहीं, लेकिन ये जो पीआईओ भी तो ये ये पीआईओ भी लास्ट टाइम भी ही वाज प्रेजेंट, सेकेंड हियरिंग में वो एब्सेंट था। नहीं, लास्ट लास्ट हियरिंग में प्रेजेंट था वो। वही तो बोल रहे हैं, अभी तो पीएचई वाला का साथ हम लोग कर रहा है, रिकॉर्ड में है ना, लास्ट टाइम वो 20 जून को ये पीआईओ साथ प्रेजेंट था। जी whatever we Mr. Piaggio, you provide the information to the appellants on or before 21st January 2025 1:30 p.m. So don't do, आपने हमें बताइए, अगर आपको मिल गया है तो you don't need to come let us know, हम लोग डिस्पोज अप कर देंगे केस को। जी जी ओके। नहीं मिलता है तो we'll see that time उसको क्या वो we have so many, 2-3 ऑप्शंस है। Will initiate a disciplinary action against the PIO, will write to his appointing authority, or else we'll write to the governor of Arunachal Pradesh. We have two options to initiate disciplinary action against the PIO. And then we can also penalize the PIO if need be, but penalizing a PIO doesn't mean anything. But when a disciplinary action is taken against a PIO, it really matters because it is reflected in the service book, simply saying service book or the ACR of the PIO. So we'll see to it that that the contempt of this court is being penalized in the judicious way. So 21st January को मिलते हैं। हियरिंग नहीं, हियरिंग हाँ हाँ हाँ। अभी तो आज का डेट में वो बोल रहा है सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको अभी उन्होंने कोर्ट में आपको सब देगा बोल के झूठ बोलने से देन वी विल फिक्स इट,
We'll fix the matter on the next date of hearing. Fixing and hearing are two different things, no? Let us see. No, no, you go to the court, whatever you want to do, but at least get the information sealed and signed by him. After that, you can go to the court. That becomes an authentic document for you. आपको बता आपको बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि आज का डेट में जब से बीएनएस लागू हुआ नया कानून इंडिया में, पहले ऐसा हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस हुआ करता था। आज उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैज बिकम द प्राइमरी एविडेंस। तो उन्होंने उस दिन आपको व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजा था, दैट इज द प्राइमरी एविडेंस। तो आप उसको रखना चाहिए। तो उसको उसमें आपको फिर कुछ यू शुडंट बी एडिटिंग इट, स्क्रीनशॉट लेके उस स्क्रीनशॉट को एडिट नहीं करने का है, बिकॉज देयर इज एन ऑप्शन नाउ। तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट का एक हैश वैल्यू निकलता है कोर्ट, उसमें अगर थोड़ा भी आप छेड़छाड़ किया तो आपका हैश वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। हैश वैल्यू कम होने के बाद में योर एविडेंस डिटीरियोरेट, एक्चुअली बोले तो कम हो जाता है उसका वजूद, द वेरासिटी। एंड दिस आई एम शेयरिंग इट विथ यू फॉर फ्री। तो होगा नेक्स्ट, आपको 21 जनवरी को सुनते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट केस इज पिसा तपाम वर्सेस, आपका केस खत्म हो गया। जी 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 बोलिए। नहीं, लास्ट हियरिंग तो 21 को हम लोग फिक्स करते हैं, बोला ना आपको। ऑन और बिफोर 21 आपको अगर फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो हम लोग विल फिक्स द केस दैट डे। जी जी वो बता रहे हैं। या पिसा तपम, तपम है ना, तपम 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 वर्सेस जेररेस्टो कोलोरियन उरुमकुमे। ये फर्स्ट हियरिंग है आज। तो यस, हाँ, इसको उल्टा जा रहा है इसलिए अच्छा करना। सेकंड हियरिंग ऑनलाइन नहीं है। नहीं, ये वाला जो कुरुमकुमे वाला, जेलरेसो कोलोरियन कुरुमकुमे पिसातापम, कोई भी नहीं है ना। 140 हो गया लगता है। Even absent without intimating the reason for his absence in the hearing. PIO absent without intimating the commission the reason of his absence and gave your hand. And it is pertinent to state that in the last hearing, which was on 24 September 2024, also the PIO was absent without informing the commission the reason for his absence. And therefore the PIO qualifies himself to be initiated action against him
under Section 25, Clause 5 of the RTI Act, which confers the right to the Commission to advise for initiating disciplinary action against him by the appointing authority, DLRS का कौन होता है? By the Secretary oblique, yeah, Commissioner oblique Secretary, Land Management. This, Commissioner oblique Secretary, Land Management, Government of Arunachal Pradesh, initiate action against the PIO and to provide a copy of the action taken to the Commission without fail, and also ensure the attendance of the PIO in the next date of hearing, to be present in person, repeating in person on 21st January 2025, 1:30 p.m. And failing which, the Secretary oblique Commissioner, LM Government of Arunachal Pradesh, will be initiated disciplinary action against him by recommending it to the Governor of Arunachal Pradesh. The absence of the appellant signifies that he is not interested or not serious with his appeal, and therefore to send a summon to the appellant to be present in the next date of hearing, and the absence of and his absence in the next date of hearing, which is fixed on 21st January 2025, shall qualify to decide this appeal ex parte. Bengia Tani and Bengia Raju, Executive Engineer PWD Sangram. Okay. Online भी नहीं है. Last time भी वो PIO नहीं आया. लेकिन उसका बाद 24 सितंबर का बाद में आज तक आपको कुछ कवर किया, या तो आप उनको कुछ फोन या उसका ऑफिस में जाके कुछ फोन करता है, लेकिन आप फोन करता है तो इनकमिंग नहीं है वो. तो नहीं, पर्सनली आप उसका ऑफिस में नहीं गए? ये को मिला है. ओके, क्या ये को बोला तो बोलते हैं आप पीआईओ मालूम होगा ना. पीआईओ को तो सर हम लोग ये आपका डिवीजन तुम्हें ये संग्राम डिवीजन जो है सर, ये पीडब्ल्यू का डिवीजन जो है संग्राम में है, फ्लोरिंग में है आपका, ये सब डिवीजन है. हम लोग फ्लोरिंग से आपका डिवीजन में आता है संग्राम 40+ किलोमीटर है, और उसमें आते तो हम लोग ये पीआईओ को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नहीं मिलता है. तो एग्जीक्यूटिव बाद में पता चला है कि आपका झूलन झूलन में आपका एक ऑफिस खोल के रखा है. तो समझ में होता है ना, डिपार्टमेंट खोलना है.
तो कैंप ऑफिस में भी आता है, हमें नहीं मिलता है। कवरिंग से संग्राम आएगा, संग्राम से ईटानगर आएगा, ईटानगर से हम लोग फिर जूनिंग जाते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। तो बाकी स्टाफ लोग को तो मिलता है, तो वो लोग बोलता है कि आप पीआईओ ये करेगा वहाँ पे, डॉक्यूमेंट फिनिश करेगा वहाँ पे। तो आपका ये चीफ ऑफिस में भी हियरिंग में भी तो आपको ये पीआईओ आएगा जी, इसका साथ में पीए भी आएगा जी, उसमें भी अल्टीमेट इसमें भी तो स्पेसिफिक मेंशन किया है ना जी, 45 डेज का आता है जी, मेंशन कर दिए, पब्लिश कर दो कुछ। अब तो ये फर्स्ट हियरिंग का बाद भी अगर डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश नहीं कर रहा तो उसका हम लोग इसी में आना पड़ेगा ना जी। तो अभी भी हम लोग को ये पीआईओ का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। The appellant states that he has personally gone to the office of the PIO and the PIO absent, but met the PA. Office का PA को मिला ना? ये भी यही है And PA stated that PIO is absent and information can be only given by the PIO. वो लोग का जुलांग में है कैंप। Further, the appellant states that instead of functioning of office at Sangram, the PIO has made shift camp at Julang Itanagar, for which the appellant also has gone to that makeshift office. लेकिन आज तक अब नहीं मिला उनको PIO. ये तो घर भी हम जाते हैं। Okay, and but he has not had the audience with the PIO. Therefore, उसका PA को आप मिलने के बाद में आज तक फिर कुछ कांटेक्ट वो लोग नहीं किए. Someone was sent to the PIO on 24 September 24 to appear in person or through online mode in the next date of hearing, which is today. Despite the order of this court, the PIO has again absented from attending the hearing without intimating to the Commission the reasons for his absence. Uh, the Commission orders the Principal Secretary, PWD, Government of Arunachal Pradesh, to, to advise the PIO to attend court hearing in the court of this commission when an appeal is preferred against him by an appellant. The action taken by the Principal Secretary PWD
ensure the personal attendance of the PIO in this instant appeal, which is on 21st January 2025, 1:30 p.m. We made available a copy of which we made available to this commission. Proceed on with the hearing of this appeal. And आपका वो एक बार अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी एक उसको लेटर भेजेगा कि इस बार कोर्ट हियरिंग में इन पर्सन आओ करके, तो उसका बात सुनता है। बिकॉज दो बार तो चांस देना ही है, तो हमारे आपको भी कुछ हो गया, आप बता भी नहीं पाया, तो हम दो हियरिंग में आपका डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको तीसरा बार भी देना है चांस। तीसरा बार में भी नहीं आता है तो हम तब डिसाइड कर लेंगे, या तो उसको पेनलाइज करेगा 25,000 कुछ भी जुर्माना, या तो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन डिसाइड कर देगा। अभी सेकेंड टाइम सेकेंड हियरिंग 25 या 21 जनवरी 21 जनवरी 2025 1:30 PM इसमें एक बार सुनता है। सर एक चिंता है जी मेरा ठीक है जी। तो सर आप वही ये बोल रहा था कि ये आपका ये पीडब्ल्यूडी संगम डिवीजन का ना जी, तो जैसे कि मेरा बापू सर का भी केस आता है ना जी, तो उसमें आप सर नोटिस किया है कि ये पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना, ऑथोराइज दे देता है आपका एपीआईओ को ना जी। एपीआईओ को जब अपॉइंट करते हैं तो एकदम ये डिवीजन का या तो जो भी ये सब डिवीजन या डिवीजन का एक डिजाइनेटेड ऑफिसर होना चाहिए ना जी जी। एपीआईओ या एडीसी यूडीसी या पीए को ऑथोराइज करके आ देता है, वो सर इसको हम एंटरटेन करना नहीं चाहता है जी। अच्छा, आप पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है, तो आप एपीआईओ को भी आपका ए या तो जे को अपॉइंट करना चाहिए जी। या तो ऐसे आप ये पीए को अपॉइंट कर देगा, यूडीसी एडीसी को भेज देगा, तो कल को एक दिन आएगा ड्राइवर भी अटेंड करेगा ना जी। ऐसा नहीं होना है, एक डिजाइनेटेड ऑफिसर ही अटेंड करना। तो सर मेरा ये तीन के तो सेम ही है। तो सेम सेम ये में है ना हाँ बेंग किया करनी इसमें भी सर ये स्पेलिंग भी गलती हुआ है। हाँ TAHI है ना सर, TANI होना चाहिए। हाँ TANI। हाँ सब तीनों केस में सेम ऑर्डर जाएगा। हाँ तीनों केस में ये उसमें आप नोट करो, एपिक 202 203 204 सेम ऑर्डर सेम सेम पार्टी दोनों तीनों में। उसमें उसमें आपका ये मेरा रिप्लाई ये होगा कि लो जो एक से कानून जो है पीआईओ को अगर वो नहीं आ सकता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है करके लिखा हुआ है, लेकिन एपीआईओ भी वो हो सकता है, उसका कोई जे भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, लेकिन आप अभी जैसे बोला उसका ड्राइवर को तो कैसे भेजेगा, तो पीए भी हाँ पीए भी नहीं हो। हाँ हम लास्ट टाइम भी एक केस हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो अभी हम जैसे कि आपका केस हम नहीं कमिश्नर ले सकता है, तो हम एप्शन है बोल के तो मैं पीए को तो यहाँ नहीं बैठा सकता, बट when the law when the law says that आप आपका रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव उस कहानी को पूरा मालूम होना पड़ेगा। अब जैसे उसका ड्राइवर तो मालूम नहीं होगा, उसका पीए तो मालूम नहीं होगा, समवन कॉम्पिटेंट इनफ हैज टू कम, जो कॉम्पिटेंट है वो आना है, उसको हम हमेशा देखते हैं मेरा कोर्ट में। एंड देन आपका जो एक ही पीआईओ के साथ में अगर 5-10 केसेस है, या तो आप उधर शिफ्ट करने से ठीक है, या तो मेरा यहाँ पे शिफ्ट करने से ठीक है, नहीं तो डेट कोइंसाइड करके एक दिन में लास्ट टाइम एक ऐसे पीआईओ हुआ है जिसको पूरा महीना केस, एक दिन मेरा इधर नेक्स्ट दिन दूसरा कोर्ट में, हम लोग का तो कोर्ट डेली चलता है, तो वैसे उसको वहां देखने का समय ही नहीं है, तो हम लोग उसका कैसे रिप्लेस किया, एक ही कमिश्नर के कोर्ट में ऐसा जैसे एक दिन में उसका 10 केस होने से भी महीना में एक बार ही तो आएगा ना, उसका ऐसा हो गया कि महीना 30 दिन में 30 दिन का माने 20 दिन का 20 दिन उसका यही केस हो गया। ऐसे अगर आप
बापू साहब को लास्ट नेक्स्ट बोल के देखिएगा। ये हो गया, ये क्लोज कर दिया। और तब तो ठीक है, तब तो यही तीन चीज है, हाँ। तीन केस है ना, ठीक है सर हम लोग ये एपीआई जे और ए हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी सिर्फ एक डिजाइनेटेड ऑफिसर ना, जी वही होना है। अदर देन डिजाइनेटेड ऑफिसर एंटरटेन नहीं करना है। जी जी। हाँ, वो तो हम पीआईओ को ही बोलता है। अब सही बोल रहे हैं, जो सही से मालूम है इन्फॉर्मेशन वो 21 जनवरी, हाँ, 1:30। नेक्स्ट, नाबुम ताई एंड मेंबर सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश बेम्बू रिसोर्स डेवलपमेंट चिंपू। आप बहुत दिन के बाद दी। अच्छा, कुछ मिला है तो देगा बोल रहा था। हाँ और आया भी नहीं, नहीं मिला हाँ, सारा इसमें। आपको भी लोग कमिश्नर के बार सवाल करेगा। ये सेकेंड हियरिंग है आपका। मतलब जी सेकंड होने से भी जी हम लोग वहाँ को एक बहुत 30 डेज लगता है। जी इसका बाद नहीं होने के पास 30 डेज, जी 60 डेज या आने 90 डेज। और यहाँ के पास सेकंड हियरिंग में उसको खत्म कर देना है। और ये भी ऐसे ही कि दिसंबर 23 को फाइल, जी। आज पास हियरिंग। आज सेकेंड हियरिंग, सेकंड हियरिंग का समय ये ये सेकेंड हियरिंग मतलब नहीं हुआ था। जी प्रॉब्लम अभी ठीक आ गया ऐसे होने जी ऐसे होना था सारा इसमें। हम लोग तो ऐसे किसी आयोग को ऐसे परेशान करेगा ऐसे बात। 30 डेज में एक कुछ प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट को दे नहीं पा रहा है, सेकेंड में 30 डेज 60 डेज या तक आने में 90। अब सेकेंड या फर्स्ट या सेकेंड हियरिंग में उन लोग को एक्शन थोड़ा क्या क्या हो ठीक है जी लेने से ठीक है जी। भैया। मैं वो कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी कोर्ट में छोटा, सबसे छोटा कोर्ट मुंसिफ कोर्ट से लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होने से भी आपको 3 बार चांसेस देगा ही, कोई भी कोर्ट में, मिनिमम से मिनिमम। क्योंकि फर्स्ट इज, सभी का हक होता है सुनने का। कभी कोई बीमार होगा, कभी कोई रास्ता में आते समय एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी मर भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये चलते में जहाँ भी सब दुनिया का कानून में एक बार में या 2 बार में सुनवाई, डायरेक्ट ऐसा हार्ड रूल ऐसा कोई नहीं बनाया है। हाँ, 3 बार तो देने के बाद तो देने वो देखना पड़ता है। इसलिए 28 करोड़ केसेस इंडिया में पूरा पेंडिंग है, क्योंकि हर एक को तो मिनिमम 3 टाइम्स तो देता ही है चांसेस। और नहीं देने से फिर कानून बोलेगा अरे आप उसको फेयर चांस नहीं दिया करते, उसी में थोड़ा ये सब देरी हो जाता है। अगर जो भी हो 1 ईयर इसमें अभी तो जी दिसंबर पहुंचने से 1 ईयर हो जाएगा। जी, अभी तो लेकिन फॉर्म एक अभी एक तो प्राइवेट फॉर्म नहीं दिया जी और बोलता है कि या में आपके कोर्ट में कुछ भी नहीं है होते हैं 25,000 फाइन कर देगा। तुम लोग कितना करना है भी बोल रहे हैं और नहीं ऐसे बोल रहा है हम उसको लेकिन दिया। हम लोग को प्रोसीड्योर से जाना पड़ेगा ना, कोर्ट का सर्टेन प्रोसीड्योर होता है। वो प्रोसीड्योर से बाहर जाके तो हम कोई भी ऑर्डर भी नहीं दे सकता है, जजमेंट भी नहीं दे सकता है। अ, इसलिए विद प्रोसीड्योर जाना पड़ेगा। तो उसमें अभी वो लोग का इसका जो आपका जो पीआईओ है, मेंबर सेक्रेटरी बेम्बू रिसोर्ट कनाडा, इसका इससे सीनियर वाला ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर कौन है? इसे ये मिशन डायरेक्टर बॉम्बो का। हाँ, मेंबर सेक्रेटरी का ऊपर ना। इसको भी दिया है। तो वो लोग तो ऐसे है ना ये साइंटिस्ट दो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट जो असली में कुछ रिसर्च नया चीज काम करना है, ये तो जीटीओ पावर नोडल ऑफिसर वर्क होता और ये एमडी बनाने में 10-15 साल एक जगह पर्टिकुलर पोस्टिंग पोस्ट को होल्ड करके देता हुआ। होगा अभी नेक्स्ट में। तो ऐसे होके सर वही तो हम और ये मांगा है जब तक वो नहीं स्टेट आता है, गवर्नमेंट। जब तक वो नहीं आता है तो हम लोग सुन भी नहीं सकते ना कि क्या आप मांगा है। वो तो हम मालूम है, भी मालूम है, लेकिन वो देगा ना नहीं देगा, किस कारण से नहीं दे पाएगा, उसको तो सुनना पड़ेगा तो पीआईओ को। तो इसलिए हम लोग पीआईओ को एक बार बुलाता है, उसका जो अथॉरिटी है उसको बुलाने देगा। अथॉरिटी ये अभी तो ये होगा। पीसीसीएफ जो हाँ उसको एक्शन ले सकती जी है, वो तो पीसीसीएफ होगा, हाँ सेक्रेटरी फॉरेस्ट ना। हाँ। इसलिए उसको एक ऑर्डर हम लिखेंगे, so the appellant present and PIO abstain for the
second time without reasons वो column जाएगा. So the commission order the secretary oblique PCCF Department of Forest PCCF ना Department of Environment and Forest Forest. or Department of Environment and Forest PCCF करके ना Environment and Forest. and उन्होंने कुछ और लिखता है क्या रिज्यूम में नहीं नहीं तो ऐसे लिखता है. क्लाइमेट चेंज ऐसा बहुत लंबा सा लिखता है क्या और PCCF का बात ना होगा और Environment का. एनवायरमेंट फॉरेस्ट उतना लिखते हैं हाँ. गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हाँ ऊपर में PCCF लिख लो. जी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ना. इसका अंदर में Environment and Forest, Climate Change, हाँ Wildlife इसका अंदर में. ओके ओके to ensure the presence of the PIO in the next date of hearing which is fixed on 21st January 2025 1:30 p.m. failing which necessary action will be initiated under section 25 clause 5 of RTI Act 2020 2005 one out. To the PIO to furnish all information to the appellant as applied in its form and वो तो है हम लोग का already failing which action will be and next date of hearing has been intimated will be 21st January 2025 1:30 उस समय वो PIO आएगा नए आने से हम लोग उस समय फिर नए आने से अभी क्या होगा आपका केस में उस समय PIO नए आने से हम लोग PIO को एक्शन नहीं लेगा PCCF पर एक्शन लेगा इसलिए PCCF को ऑर्डर किया उसको लाने के लिए बाकी कमिश्नर लोग पुलिस को अरेस्ट करने ये सब बोलता है तो मुझे सब पसंद नहीं है वो लोग कोई एक्शन भी पुलिस लोग एक्चुअली नहीं ले सकते तो PCCF तो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर सकता है इसका बम्बो मिशन का चेयरमैन लेकिन चीफ सेक्रेटरी होता है. ये फिर APFC को भी आप डाला है हाँ चेयरमैन. अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये और मेंबर्स अभी का ये सेम आदमी नहीं है सेम आदमी है अभी तक. लेकिन अभी कल को चेंज हुआ है पूरा. अभी चेंज हो गया. एक तो ये जिलों का डिविजनल मैनेजर ना. इसमें भी वही सेम ऑर्डर जाएगा हाँ. नहीं आया वो ये 20 क्या है वो ये कुछ 206 में भी द सेम ऑर्डर 206 तो अब साइन कर लिया ये जनवरी 21 को इससे मिलता आपका लेकिन ऐसा इतना बड़ा रूम तो आपका इंफॉर्मेशन हो रहा होगा घर में नहीं दिया है ना डिपार्टमेंट. नहीं हर एक डिपार्टमेंट से आप मांग रहे हैं तो आपका नहीं घर में हम इतना डिपार्टमेंट में नहीं मांगा. फॉरेस्ट में मेरा 6 जैसे केस था ना. हम अलग इंजीनियर में मार अभी तक मार्क्स नहीं लिखा है. ओ हाँ और मेरा एनजीओ भी है ना. हाँ उसको बताया है मेरा वो बाय हाँ रिदम कातो एंड मोगे बोले Yes. You become carry on. Firstly, I filed an RPI petition before the PIO, Union Police Alo, with regard to the certified copy of the extract, copy of the GDNC. Yeah. That from that in connection with the Alo PS case number 47, wherein I am understanding is the complainant. Secondly, certified copy of the extract copy of the GDNC from Itna to Itna, in connection with the Alo PS case number 49. Wherein undersigned is the accused. Okay. And the other is the certified copy, registered copy of the GDNC showing entries in connection with the written complaint by the undersigned against the W. Lorian of Doctor. And
And in reply to that, the PIO sir uh, replied me stating that the information sought by you fall within the restriction containing section 8J, 8J of the RTA. And after that, I filed my first appeal before the SPA. And so, without uh, conducting any hearing, he just gave me a reply wherein this is the copy of the reply, wherein there is no specific subclause is given. Very vague reply. Because there are very numerous subclause in section 8, okay. But here you can see. Yes. So as a result, I have come here, and you know, I'd like to advise your good office. The final form of the above mentioned two case, that is the allocation, case number 47 and 49, has been already submitted before the CGM court. Case number 47, final report has been submitted. And with regard to the case number 49, charge sheet has been submitted. Yeah. So by virtue of being all the documents is forwarded to the court, now it's become a public document. And if you see, this is the this is the charge sheet copy. Okay. For the record. So you mean to say, out of the three informations that you have asked the PIO, one is the GD entry for the case number 47/23, where you are the complainant. Yes. Complainant, yeah. And then for the GD entry of 49/23, where you are the accused. Yes. And in this third, I am the complainant. Again, in the third also you are the complainant. Yes. So against Dolly Nolan. Yes, yes. And Your Honor, as per the uh, as per the section 44 of the Police Act, uh, I have marked the section 44 of the Police Act. It defines the uh, general diary. Yeah. Your Honor, section 44 of the Police Act 1860 states that every officer in charge of police station to keep a general diary in such a form or set from time to time prescribed by the state government and record them therein complaint and charges preferred, names of the all person arrested, names of the complainant, the offense charged against them, the weapon or property that shall have been taken from them. By virtue of this document, there is definition. So this GD entry doesn't come under the no, section 8J, by view of section 8J. This is my understanding. Yeah. Let us hear from. So, PIO, Mr. PIO, what do you have to say on this? You have denied the three informations that appellant has asked from your office, stating that they are exempted from Section 8, Clause J. In your reply, you say that, but in the reply of the first appellate authority, he has stated vaguely, which is not clear as to under what section of under what subclause of Section 8 the informations sought by the appellant are being exempted. So, what do you have to say on this? Yes. Yes.
Section 8, clause H. H. And of which, what section under CRPC you say that it's sub 172 sub clause G of CRPC. Section 172 sub clause G CRPC. No, sir. This is talking about indexation. Hmm. I'm I'm concerned with the general entry. If you see, sir, under the Police Act, uh, Section 44 of the Police Act is clearly stated the expression diary referred to Section 167, now 187 in BNS, Hmm. BNSS of the CRPC 1970 is different from the general diary. Here, CR section diary mentioned in the CRPC is different from the general diary. It is clearly stated in the Section 44. No, Mr. Piayo, can you brief us what is exactly a general diary according to you? So, uh, in this case, general diary is the challan or the document which is sent to the court for this particular case, for a particular case. The challan or the final report of the police. Yes. Also comes under the general diary. So you mean to say the whole case is within the ambit of the general diary? Yes. So one more thing, under law, when a when someone complains to the police, does the complainant have the right to get a copy of the action taken from the police or not? Yes, free of cost. So what are those copies of the informations that the complainant will get? Yes, 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 yes. So these two informations you give the complainant for free. Okay. So, excellent. I also want to get from you if you can get the final report. Does it solve your problem? No. No. So the general you are seeking of the whole thing. No, no, I'm actually general diary. No, the PIO says that the general diary involves all the documents and papers in a particular case. This case already has been this completed. Investigation is completed. Yes, that's fine. That's why there should be no like restriction to give me information regarding this. Yes. If you see the definition, you know, yes, you see the definition in section 44. Yes.
of Police Act. This is Police Act. Yes. Section 44 of the Police Act. What does it? It shall be the duty of every officer in charge of a police station to keep a GD in such form as shall from time to time be prescribed by the state government and to record herein all complaints and charges preferred, the names of all persons arrested, the names of the complainants, the offences charged against them, the weapons or property that shall have been taken from their possession, or otherwise, and the names of the witnesses who shall have been examined. So I think all these things would be in the final report, whatever they have found out in a case. But I want that is the diary. But Your Honor, this is in many cases. Yeah. General diary. Yeah. In cases like Keshav Ghosh versus State of West Bengal, wherein it has been recognized that in various legal contexts, a document, this GD entry has is a document of evidentiary value. Yes. Now this case against me, and this case number 47 is 49 is pending before the CDM court. Yes. That's why I would be needing this document. Yes. For my case. Mhm. That's why I'm asking. And as per they are saying that they have restricted me to supply their document as per section 1, section 8H of the RTI Act. And if you see the section 8 of RTI Act, RTI section 8, information which would impact the process of investigation and apprehension or prosecution of a offender. Whereas there is no such a like the process of investigation is completed already. Yes. No, herein in the number one detail of information as required, in the number one and number three, you are the complainant. Yes. Yes. You are not the offender. Yes. You are not the offender. Maybe in the second case, as you are the accused, you might be treated as the offender. Yes. But in these two cases, as you are the complainant, and as the final report has already been submitted to the court. Yes. Now there is no apprehension of you being contemplating or you being manipulating anything. Yes. So, and then a copy of that final report or the whole case would obviously should be kept with the police station. So, and another copy has already been submitted to the court. Your Honor, I am asking the main motive behind asking me the GD entry is that uh, there has been a like illegalities, illegalities in this case regarding section 49. I mean, case number 49. That's why I am stressing that I need the GD entries. No, that is not our. That is not our matter to be seen if they are manipulating or doing whatever. But our purpose is to see that you get the information for the information that you are to get. Yes. Under law, under the act. Yes. So according to this what the PIO has cited now, under section 8 clause H of RTI Act, those informations which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of, of offenders will not be given. But here in the instant appeal and in this instant case which you have uh, applied for the information, first thing is you are a complainant, not an offender. First thing, you are a complainant. You are not a offender. And in the third also, you are the complainant, not the offender. So, and the process of investigation has already been finished, and there are no apprehension or prosecution of you as a offender. So, Mr. Pio, in your statement, you have said that you have not provided the appellant the information according to Section 8, Clause H of RTI Act. Herein, you also go through the writings of Section 8, Clause H, the averment. It says specifically, it mentions a word offender. Herein, the appellant is not an offender. Yeah.
So, this one. I'm accused in section, sorry, case number 49. Yeah, you are. He's talking. We are now talking about case number 47. His application under details of information required clause 1 in his form A. If you are contradicting with this, Let us hear from him. Can you go through form A of the appellant? Details of information required clause 1. CT CTC of the extract copy of GD entry from 22nd August 23 to 1st November 23 in connection with the ALO PS case number 47/23. Complaint lodged by the undersigned. Form A of the appellant. The particulars of information he has sought for. Okay. So you write the regions not providing him the information, but simply by writing, by quoting section 8 clause H does not justify your uh, denying him of the information. yeah, Yes. this case was registered. PIO is, I don't know why, it was registered. You can see it. And it was, uh, the IO was, the legal, legality was assigned as the IO. Yes. Clearly, it is, if there is no registration, then how come this police have submitted the final report? Yes. Yes. So PIO, yeah, yeah. Yeah, it's all. If a final report. Yeah. So the details of the, This is not complete. yes, Yes. yes, Right to, yes, it's still right. yes, Okay. I have the right to like see for just before the Supreme Court. Yeah. So so in this case, uh, he cannot be denied the information that he has asked for because he himself is the complaint, and you have the duty to furnish him the informations those that are not exempted. At least if you have tried it that way, you might still you might have certain informations which are exempted. You might also have informations which are not exempted. So you should have given the informations which are not exempted to a complainant in a case where he is the complainant and he's asking the informations under RTI again. So what you have to do is you do provide him the information which are not exempted to him under the RTI Act. But I also cannot ask you to order you to provide the information which are exempted. But I don't see anything under this one. I don't see any of the information be exempted because he himself is the complainant. Had he been the offender, the matter would have been different. Because RTI Act clearly and specifically says prosecution of offenders, not complainants. So number 1 and number 3, the CTC of the GD entry in showing whatever under the same, it is the same case, I think, in number 3 also. Number three, no, number three is different. Different case, but you have not cited the case number. No, no, because But the name of the parties you have cited. yes, yes. Because they have So never. do you have any idea this case is registered, Sri Dolly Lowland? No, Okay, they haven't registered. That's why I was asking for the DD entry. yeah. Complaint file again then Hmm. before the higher authority. Hmm. That's why they are reluctant to give me this DD entry. Hmm. DD entry is not
Not an actually, it's a secular, it is not a secret document. I know, yeah. And by virtue of, Your Honor, by virtue No, of, the prime thing is you are the complainant in two cases. yes, In one of the cases, you are the accused. They might take the plea of Section 8H, wherein they are at liberty, at the right to take the plea because you yes. are the accused here. So But if before but the final report is being made, ah, giving you informations may hamper the evidences and all also. I But don't think. now, if the final report is submitted to the court, then the court also will give you the whole thing. No, If you ask. but yes, court. I have Ah, asked the court. mm. That's why court has provided me the Yes, document. exactly. Yes. Yes, but I need the actual copy of the general Ah, yes, yes. because at what time who was the duty of officer of that particular day, particular Yes. time? That I need. Yes. So here And also, and you know, no, the one principal thing in law and natural justice also, an accused is not guilty until proven. Yes. That is there. So even if you are the accused in a particular case, when the final report is already submitted to a court, in your case, you have the right to see the documents, to safeguard your defense. I understand that. So, so Mr. Tiayo, what I find here is in the number one and number three, he is the complainant himself, and denying him the informations to his own case will be bad in law because he has to be given the informations of whatever you have done in his complaint. If it is even an FR also, you have to give the copies of the information that you have dealt into that very particular case. But still you have denied it to him. But what he wants it, maybe he wants it particularly from your office. Yes. That is why he's asking it. Yes. Or else you have got some of the information. Yes, I have the information, but this is a different format. Yes, And yes. I want the format of I know, I can understand because getting an information from the office of the PO means much. Yes. It is different from getting it from some other source. Yes, Yeah. exactly. So here you cannot deny one and two. Let us come to number two. CTC of the extract copy of GD entry from 30th August to 23rd December 2023 in connection with the ALO PS case number 49/23 against the undersigned. So, Mr. PIO, have you submitted the final report of the case number 14/23 to the court? Charge sheet. Yes, charge sheet. That is the final report. Yes, final form. Final form, yeah. You have submitted it already to the court. Yes. Oh, okay. So there would obviously be a copy with you in your police station. The original copy would be in the court. Yes. But a copy would be there in your office also. So how do you deny him the copy when every investigation is already done? Whereas he is the one who is accused. And no, he is asking it from you, your office. He has applied it to your office, and your office has the duty to actually it's a liability to provide him because it's a act, RTI act. Yes. And then everyone be it an accused, they have every right to get defense or defend themselves from that accusation. And until the court proves him to be guilty, we cannot be saying outrightly that he is convicted or a criminal or whatever. Yes. So before the court pronounces the judgment,
He has every right to defend himself. And how does he defend himself? By seeing all the documents that are against him. So to prove entry against all those accusations or findings, he has to be with all the papers to stand before the court. And he also has the same informations, I believe, but those are obtained from another source. But now he wants it to get it from your office, particularly. So, and then your office has denied it. So it has gone to the office of the first appellate authority. The first appellate authority has given a very vague reply, which is not desirable from an IPS officer, to be very precise. So he has come to this court of the State Information Commission. And the commission finds that the appellant has got all the rights to be provided with the information. And so I order you, Mr. PIO, to provide him the information as he has applied on or before the next date of hearing, which is fixed on 21st January 2025, 1:30 p.m. So, appellant, you let us know before if the PIO provides you the information on or before 2025, you also don't need to come. The PIO also don't need to come. We'll dispose of the case in both of your actions. Yes. But the complete information that we have. Okay. So let us know if you have received the complete information or no, on or before 21st January 2025. Yeah. So you want this week, no? And so the order will go. Yeah. Yeah, you have to provide all the information. Before 21st January. Your Honor, additionally, just I'm curious, uh, can I claim for any compensation under Section 19(8)(b) of this Act? Because they have paid, This is the second hearing, no? yeah, And then for compensation also there are procedures and ways. You have to have certain uh, evidences that yeah, evidence is no, 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 no. On what ground you are asking compensation? I am just asking compensation because of this because of this there, 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 because of the negligent part on the first appellate authority, I had to come here. Yes. Because of the deliberate intention to not give me information on this GT entry, I had to come and file. And then, and this is my fourth time. And every time I come from Alo to Itanagar, But this is the second hearing. I think. no, no, Second hearing. actually, first time I was absent. But before that also, Your Honor, before that also, in two occasions, this there was no hearing, but the this was No, maybe that time it was in a different court. not Not in your my court. No, but on the records, this is the second hearing. Maybe because it was cancelled actually. Okay, yeah, that won't be taken into account. No, at least you also have to understand. Yes, yes. That time I had gone for a surgery. You can see on on the forehead. No, Yeah. that's why. That's why just I am. So let us see if the PIO provides you with the full information on or before 21st January. Let us hear you on 21st January again. Okay. That time we can discuss on that elaborately. Yeah, 1980. Yeah. I'm very curious to know this rights actually. Yeah. Because this is Let us see on that date. Okay. So, Mr. Piayo, the date of for next hearing is 21st January 2025, 1:30 p.m. And you are to provide him the full information on or before that date. अरे बोला क्या बोला 22 21st